इंटरनेशनल ब्रेक हमारे पास आ गई है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दी मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल ब्रेक विल बी हाउ थॉमस टुखेल लाइंस अप इंग्लैंड, हाउ विल ही ब्रिंग इंग्लैंड बैक टू ग्लोरी, एंड आई डेफिनेटली बिलीव ही कैन। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। थॉमस टुखेल सबसे ज्यादा फेमिलियर किन फॉर्मेशन से है? 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3 और 3-4-2-1, as you like. There are some things that Thomas Tuchel always has constant in his tactical changes, जिसको हम कहते हैं भाई building out from the back with three players at the back. That's his most favorite thing to do. Three at the back during build up, that is very necessary for Thomas Tuchel. And the second most important thing for Tuchel is कि भाई उसके पास दो नंबर 10 जरूर होने चाहिए। और जो विंगर्स हैं या फिर विंग बैक्स हैं, विंगर्स इफ यू आर यूजिंग अ 4-2-3-1, या फिर विंग बैक्स हैं इफ यू आर यूजिंग थ्री एट द बैक, दे ऑलवेज होल्ड द विड्थ ऑफ द गेम टू स्ट्रेच आउट द गेम, ताकि प्ले को भाई आउट वाइड करें, किसी तरह डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करें। चांसेस क्रिएशन की अगर बात की जाए तो थॉमस टुखेल always likes to use these wing backs to create low driven crosses into the box, जिसके अंदर जो उसके दो नंबर 10s हैं, they play a very important role by creating runs in behind the players or by creating runs near the byline from the inside channels. These things are very important for Thomas Tuchel. These things will always remain constant in his tactics. Another thing that Thomas Tuchel really likes to do is his chance creation also comes from playing with wide triangle combinations. जब भी आप लोगों का जो विंग बैक है और फिर आप लोगों के जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं along with their midfielder or a striker, they can create triangular combinations to help the team out wide in attack. Underlapping runs are a major asset for the two number 10s. ये चीज थॉमस टुखेल को हेल्प करती है डेप्थ क्रिएट करने में ड्यूरिंग देयर अटैक्स। डिफेंसिव टैक्टिक्स की अगर बात की जाए थॉमस टुखेल के, he is a pragmatic high pressing coach. He really likes to press high with his team, लेकिन उसमें भी भाई कोई ना कोई टैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जोनल हाइब्रिड मार्किंग, दैट इज एन important and major asset. They always like to, majority of the times Tuchel likes to defend with a 5-4-1. ये लोग फोर्स करते हैं कि आपके ऑपोजिशन को जो है ना आउट वाइड खिलाएं। जोनल मार्किंग जो होती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखोगे जो भी ऑपोजिशन है सेंट्रल प्लेयर्स को मार्क किया जाएगा ताकि उधर से आपके चैनल्स क्रिएट ही ना हो पाए फॉर अटैक्स। थॉमस टुखेल इज अ रिनाउंड मैनेजर। मेन एसेट उस बंदे का क्या है? वो नॉकआउट मैचेस का किंग है। While playing at Chelsea, he had 74% win rate in knockout games. Now, will this thing be a huge asset for England? हाँ, क्यों? Gareth Southgate in comparison only had 54% win rate in knockout matches. Thomas Tuchel managed to grab 122 points in just 63 Premier League games. He kept 49 clean sheets out of 100 matches in all competitions, which was more than any Premier League side. Tuchel के पास एक टैलेंट तो है भाई, यंग प्लेयर्स को और अच्छे टैलेंट्स को जो है ना प्रॉस्पर कराना। वी कैन ऑल सी नेमार को फॉल्स लाइन खिलाते हुए अंडर हिज पीएसजी, ही लेड पीएसजी टू द चैंपियंस लीग फाइनल। हैरी केन हैड वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस अंडर टॉमस टुखेल। ऑल्सो मेसन माउंट जो अब बेंच पे पड़ा रहता है या मरा रहता है, he became wonderful and had his best season under Thomas Tuchel. Osman Dembele during his time at Borussia Dortmund, वो भी perfect किया था in terms of goals and assists under Thomas Tuchel. Aubameyang, Mkhitaryan in terms of assists. There are countless players जिनको Thomas Tuchel ने prosper कराया है। अगर हम लोग बात कर लें अब आपके साथ टैक्टिक्स की, ड्यूरिंग हिज टाइम एट चेल्सी थॉमस टुखेल हैड एडवर्ड मेंडी जो एक बहुत ही एक्सेप्शनल शॉट स्टॉपिंग गोलकीपर था। प्लेयर का टैलेंटेड होना जरूरी है बॉल के साथ, लेकिन ही नीड्स टू बी अ परफेक्ट शॉट स्टॉपर। और यहाँ पे इंग्लैंड की स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक हिज बेस्ट शॉट इज पोप। Pope will be an excellent keeper for Thomas Tuchel. That could be a very important thing in his English team. सेंटर बैक्स की अगर बात की जाए, लेफ्ट सेंटर बैक पे आई बिलीव कॉलवेल इज द वन हु कैन स्टार्ट। कॉलवेल इज अ वेरी ब्रिलियंट टैलेंट, क्योंकि थॉमस टुखल प्रेफर करता है कि वो जो है ना उसके सेंटर बैक्स एजाइल हो, मोबाइल हो, वो भाग सकें।
क्योंकि his wing backs will obviously be pushing out really wide और attacking wing backs वाला role लेंगे, तो he needs them to cover the spaces. So I think Colville can be a player who is capable of doing that. Right center back की अगर मैं बात करूं, he has got Eric Konsa. He is a very good center back. अगर ये भी ना चले तो he still got Jared Branswaite, जो अभी एक अपकमिंग टैलेंट तो है लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यू कर देते हैं कुछ क्लब्स ऐसे प्लेयर्स को। मिड पे अगर हम आ जाएं तो मिडिल सेंटर बैक भाई मैं कहता हूँ स्टोन से बेहतर उसके पास कोई है ही नहीं। उसको एक लिबेरो वाला रोल चाहिए होता है, क्योंकि ऑफन टाइम्स वील सी दिस सेंटर बैक ड्रॉपिंग इनटू द मिडफील्ड, एंड आई थिंक स्टोन्स ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया विद सिटी में व्हाइल प्लेइंग दैट रोल, सो ही कुड बी एन इंपॉर्टेंट एसेट इन दिस पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली अगर राइट विंग बैक की मैं बात करूं तो कौन आ सकता है उधर? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। क्योंकि भाई क्रॉसेस खिलाने हैं तो फिर आपके पास और इससे बेहतर प्लेयर कौन हो सकता है? ट्रेंट कुड बी दी ओनली वन। लेकिन लेकिन अगर मैं देखूं, रीस जेम्स इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, एंड ऑब्वियसली चेल्सी को मैनेज करते हुए ही हैड अ ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग विद हिज फुल बैक्स। वी ऑल नो रीस जेम्स और चिलवेल वर ट्रेमेंडस अंडर टुखल। तो यस, अगर हम लोगों को सेकेंडरी कोई प्लेयर चाहिए तो रीस जेम्स कुड बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एज वेल। मिडफील्ड में अगर हम आ जाए तो फिर तो हमें पता है जो ऑब्वियस स्टार्टर्स हैं वो कौन होंगे। जूड बेलिंगहम, he could play as a number 8. I still believe he's a very good box to box midfielder. He could flourish under that role. दूसरे सेंटर मिडफील्डर पे आ जाते हैं भाई, राइट सीएम कौन होगा? डेक्लन राइस भाई। Obviously, Declan Rice has the capability to cover the ground, and he has the capability to cover for Jude when he's playing as a box to box midfielder. लेफ्ट विंग बैक पे अगर हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचें, क्योंकि साका साका इज नॉट अ बैड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। साका के टैकल्स एंड हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट फॉर डिफेंस इज रियली गुड। वैसे ही अगर टुखल भी क्रिएटिव हो रहा होगा, ही कुड ट्राई दिस एज वेल। साका खेल सकता है लेफ्ट विंग बैक, आई एम श्योर ऑफ दैट। लेकिन स्टिल if Saka doesn't work out, he has got a player like Chilwell जो injured तो रहता है, लेकिन we all know Chilwell is a very good लेफ्ट बैक। शॉ को मैं अभी नहीं इसमें लाना चाहता, क्योंकि शॉ आई डोंट थिंक अब फिट रहने वाला है। वो ना ही यूनाइटेड में रहता है ना ही कहीं रहता है, वो बंदा अब घर पे बैठे है यार। और भाई अगर आप फ्रंट हम लोग थ्री की बात करें तो लेफ्ट फॉरवर्ड फोर्डन, ही इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेयर। ही इज गोइंग थ्रू अ बैड स्टैंड, लेकिन आई स्टिल बिलीव फोर्डन हैज द टैलेंट, क्योंकि वो एक एज अ नंबर 10 भी खेल सकता है। ही कैन प्ले एज एन इनसाइड फॉरवर्ड एंड टुखल लाइक्स दैट, सो ही कैन बी अ डेफिनेट ऑप्शन। रैशफोर्ड खेल सकता है फोर्डन की जगह अगर उसको कॉल अप मिल जाए, बात तो यही है। हैरी केन इज द ऑब्वियस चॉइस फॉर द नंबर 9। इफ नॉट हैरी केन, they've also got Ollie Watkins. Ollie Watkins किसी से कम नहीं है। He is brilliant. He is amazing as a striker. एंड लेफ्ट फॉरवर्ड पे अगर रैशफोर्ड नहीं है, जो अगर की बात ही रैशफोर्ड होता ही नहीं है, तो we've also got a choice as Gordon. Gordon is also a very good talent. अगर मैं राइट फॉरवर्ड की बात करूं तो फिर भाई जैसा कि मैंने कहा नंबर 10 पसंद है, तो फिर हाउ कैन आई फॉरगेट द मोस्ट creative and brilliant player in the Premier League right now. I think he's leading in terms of goals and assists in the Premier League of this season. Cole Palmer. This guy अन्नी मचा देता है यार, ये बंदा मतलब किसी को छोड़ता नहीं है। आई नो थोड़ा बहुत अभी इसके ऊपर चल रहा है शोर शराबा के यार, ये तो बड़े मैचेस में गायब हो रहा है, लेकिन स्क्रू दैट, कोल पामर is a world class generational talent. I believe this is how Thomas Tuchel will line up England. Harry Kane up front, Foden, Saka. Thomas Tuchel will play his first match against Greece. It should be a win, लेकिन it will be very exciting to watch कि ये किस तरीके से मैनेज करते हैं। Obviously, he does not have all of these players right now, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक है। काफी प्लेयर्स बहानों से भी छुट्टी मार के भाग रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने नहीं खेलना। I think Licha is doing the same thing as well. लेकिन it would still be very exciting to see how Tuchel plays with England and how he leads this team to win the World Cup.